Hello friends, I am Ashok Kumar. I am an IPS officer of 1989 batch. I have done my BTech and MTech from IIT Delhi. I am teaching you through this Unacademy application. You can also download the Unacademy Create app and teach like me. Today we shall be talking about how to crack civil services. First of all, we should realize why go for civil services. So let's talk about the point why go for civil services. What is your aim from life? That is most important. Before we decide whether we should go for civil services or not, we should realize what is our aim in life. So the answers that I have been getting from teenagers and youngsters from various backgrounds is most of them would say money, fame, recognition, power, social status, helping the society, job satisfaction. Some of them will also say peace of mind. So all this reflects is that the ultimate aim of life is to be happy. The only thing is happiness for different people means different things. Happiness is a relative term. Someone is happy just by helping the society, and someone seeks happiness through money, maybe through power, maybe through social status. Therefore, we should decide that what makes us happy in life. That is the first major question. About 2 decades ago, career opportunities were very limited, but now youth have a lot of options about their career opportunities. But the job that one must choose should be close to your heart. It is like the Three Idiots movie, that going for engineering and you have no knack for engineering will ultimately not make you happy. Therefore, our job must be close to our heart. So coming back to the same question, that why should one go for civil services? Is it power? Is it social status? Or is it money? Or is it just your parents' desire? Maybe it is opportunity to serve the people, opportunity to contribute to the society. Maybe you have a chance of nation building. Maybe you also get a chance of making a perceptible difference in the lives of people. Some of them would also say job satisfaction. It's a very challenging job. Self-satisfaction. I would say that civil services is not just one of them. It is all of the above. Whatever we have said, you get everything in civil services. Be it power, be it social status, be it the opportunity to serve the society, be it making a difference. Therefore, civil services gives you everything. Now I would talk about why I opted for a career in civil services. I did my engineering from IIT Delhi. Why? Why did I join IIT Delhi? I joined IIT Delhi only because I was good at maths. Number one, I could score good in mathematical subjects. Number two, the society wanted you. If you are good at maths, if you can score well, the society pushes you that okay, you are the cream of the society, therefore you should join IIT. So I joined IIT Delhi to do my engineering. Till the end of third year, I was totally for this thing that I will serve the nation by joining some good engineering company. In my times, people used to go outside India, go to USA, go for IIMs, but I never had plans for all those things. I always thought that I will join some good engineering company and serve the nation. But after the end of third year, we have to do our practical training, we have to do our industrial training for 2 months, which I did in Usha Fanj, Calcutta. During those 2 months, I realized that engineering is not my cup of tea. I came just by chance to IIT Delhi, but
I should also have a liking for the job. In those 2 months, I realized that engineering job is a different kind. It does not suit me. For me, spending those 8 hours in the day used to be very, very difficult with the machines, with the other engineering items. Therefore, that was the period when I decided that engineering is not made for me, and then I decided to make a switch in my career. I decided to go for civil services mainly because I felt that civil services gives us direct opportunity to serve the nation, to serve the people, to make a difference in the lives of the people. So that's why I joined civil services. Now, coming to the next aspect. First, we have decided why should one go for civil services. Now, the next point is who should go for civil services, or what is required to crack civil services. So let's first look at what UPSC is looking for. When UPSC is going to select the civil servants of the country, so the important question is what UPSC is looking for. UPSC is certainly looking for a positive and energetic personality who has good IQ, good intelligence, who has good EQ, emotional quotient, who has a positive and ethical mindset, means empathy, honesty, integrity, all these basic positive attitudes, who has good comprehension and communication skills, who can understand the issues in depth, whose analytical ability is very good, who is mentally alert, who can make good decisions with balance of judgment, and whose expression is clear, effective, logical, and to the point. That is what UPSC is looking for. Now we talk about what is the key to success in life. जिंदगी में सक्सेस कैसे मिलती है, सक्सेस के लिए क्या क्या फैक्टर इम्पोर्टेंट है और कितने इम्पोर्टेंट है. सक्सेस वी ऑल नो is dependent on hard work, is dependent on your talent, your aptitude, luck, chance, and is another major factor. Some people say success comes to only those people who can promote themselves, who know how to market themselves. And maybe that success is a combination of all of the above. So in my assessment, civil services exam requires at least 3 of them. उन तीनों का रेशो क्या है, I want to tell you all. First and foremost is aptitude, your capability, your talent, your potential. I give 35% marks to your capability and talent and aptitude. Next comes your hard work. Hard work, your capacity to work hard, perseverance, passion, determination. All this I give 50% marks. And luck oblique chance, जिसको लोग luck कह सकते हैं, chance कह सकते हैं, क्योंकि it's an important factor for success in life. Sometimes just by a second we miss the train. So that's so important. Therefore, luck and chance also has 15% factor. Due to this 15% factor, sometimes people say that UPSC is unpredictable public service commission. Now, coming back to the question that what all is required to crack civil services examination. First and foremost, of course, is good IQ combined with good scoring potential. Though there are examples, I will talk about that there have been people who have failed in classes and still qualified civil services. Next important point is hard work and perseverance. I would say that at an average 10 to 12 hours per day is required. हर दिन 10 से 12 घंटे की आपकी एवरेज आनी चाहिए. इतना हार्ड वर्क की कैपेसिटी और लगातार 2 साल, लगभग 2 साल.
जिसको मैं मानता हूँ, हो सकता है 1 साल और एक्स्ट्रा लगाना पड़े, पर 2 साल का आप मेंटली मान करके चलिए, और 10 से 12 घंटे रोज, इतनी आपके अंदर हार्डवर्क और परसिवरेंस की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आई वुड गिव द एग्जाम्पल ऑफ एकलव्य हियर, जिसको गुरु ने भी मना कर दिया, एंड स्टिल बिकॉज ऑफ हिज शेयर विल पावर he could make it to as good as Arjun. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज फोकस। जिन लोगों में फोकस नहीं है वो सिविल सर्विसेज कभी क्रैक नहीं कर सकते। सिंगल पॉइंट डिटर्मिनेशन, सिंगल पॉइंट कंसंट्रेशन चाहिए। इफ आई एम डाइवर्टेड टुवर्ड्स 100 थिंग्स, टुवर्ड्स फेसबुक, टुवर्ड्स दिस, टुवर्ड्स दैट, तो कभी नहीं होगा। फोकस एंड कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी रिक्वायर इज प्रॉपर प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। if our planning is poor, if our time management is poor, तो हमारी एनर्जी वेस्ट जाएगी, वो 10 एक्स्ट्रा चीज़ों पे लग जाएगी जहाँ उसको नहीं लगना चाहिए। देयरफॉर गोल सेटिंग, प्रॉपर प्लानिंग, मैनेजिंग योर टाइम इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। आफ्टर नोइंग what UPSC is looking for, what is required for success in life, the next important thing is SWOT analysis. What is SWOT analysis? SWOT analysis is analysis of your own self, your own strengths. आपकी क्या क्या strengths हैं, क्या क्या weaknesses हैं, क्या opportunities हैं आपके पास, and what are the threats to you and for your selection. So one should be very true to oneself. One should have good assessment of oneself. अपने बारे में आप ठीक से एनालिसिस कर सकें कि यस, मेरी पढ़ाई करने की क्षमता है, मेरी स्कोर करने की क्षमता है, मेरी मेमोरी की क्षमता है। लोगों की, किसी की स्ट्रेंथ मैथमेटिक्स होती है, किसी की अच्छी मेमोरी होती है, किसी की कोई पॉइंट वीकनेस होता है। तो ये सारे को एनालिसिस करके तब हमें डिसाइड करना चाहिए कि हम जो है सिविल सर्विस के लायक हैं कि नहीं हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जो हार्डवर्क की क्षमता है या स्कोरिंग कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यूजुअली 70, 80, 90% वाले हमारे 10th और 12th के स्कोर्स होने चाहिए, पर ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमारे 90 बैच के मिस्टर भास्कर राव हैं, कर्नाटका में अभी ADG हैं। आई नो दैट ही फेल्ड इन क्लास 8th, he failed in class 8th and later on he made it to IPS. So how come? So I asked him how come. So Mr. Rao says that it was the sheer feeling of humiliation and feeling of rejection. Feeling of rejection by his own friends, by his own classmates, by his own teachers, by his own family, which provided him the required motivation and fire and passion to work hard. Just to overcome that feeling of rejection, he worked so hard, single-pointedly, dedicatedly, that he made it to IPS. Therefore, nothing is impossible. I know another friend who was mediocre, 50%, 55% till the university. Till graduation, he scored 50-55%, and still he made it to IPS. So, it is not impossible for academically average students to crack civil services. But the point again is that your energies should be channelized in right directions and your time should be properly managed. Now, after you have decided that okay, I need to go for civil services and I have the required capability to crack it, then you should make your action plan. For starting anything, as Abraham Lincoln said, that give me 6 hours to chop a tree and I will spend the first 4 sharpening the axe. पेड़ काटना है तो पहले 4 घंटे हमें अपना कुल्हाड़ी को ढंग से तैयार करना होगा। दैट मीन्स हमारी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो हम समझें कि एग्ज़ाम क्या है, इसकी नेचर क्या है, सिविल सर्विसेज की नोटिफिकेशन क्या बोलती है, व्हाट इज़ द सिलेबस. So we should analyze the previous year's papers, question papers thoroughly. What are the recent trends? Then we should also discuss in detail with teachers, with successful candidates,
and also with unsuccessful candidates, because next point comes is we need to choose one optional subject. Choosing an optional subject is very very important. You should choose a subject not because people are going for it, not because लोगों ने बोल दिया हिस्ट्री बहुत अच्छा देती है, पब एट बहुत अच्छे मार्क्स देता है, नहीं. एक सब्जेक्ट के साथ आपको 2 साल लगातार जीना है, उसकी तैयारी करनी है. देयरफॉर यू शुड चूज ए सब्जेक्ट विच इज़ क्लोज टू योर हार्ट, जिसको पढ़ने में आपको मज़ा आता है, वेयर यू हैव गुड स्कोरिंग कैपेबिलिटी. सो it should be your own choice and not others. Others can only help you make a choice, but choice should be your own. दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी में तैयार करेंगे, इंग्लिश में करेंगे या रीजनल लैंग्वेज में करेंगे. दैट अगेन इज टोटली इट शुड बी डिपेंडेंट ऑन योर ओन कमांड ऑन द लैंग्वेज, कि आपका लैंग्वेज पे कितना कमांड है. कई बार लोग पूछते हैं कि वर्किंग एक्सपीरियंस बैड कनेक्शन दिखा रहा है. कई बार लोग पूछते हैं कि वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए कितना मुश्किल है. इट इज़ टफ फॉर वर्किंग एक्सपीरियंस, बट इट इज़ नॉट दैट यू कैन नॉट डू इट इफ़ यू आर वर्किंग. यू कैन स्टिल डू इट. पीपल हैव फाउंड टाइम 6 to 7 hours per day they can take out of their work and crack the civil services. Talking about the role of coaching centers, I would say that coaching centers have a role. They do have a role, because वो आपको हेल्प करते हैं. ये सब चीज़ें जो मैंने बोला है कि how to prepare, what to prepare, which books to read. They also help you sometimes make your own group and give you the basics of the subject. But coaching centers are not everything. कोई लोग सोचें कि खाली हम कोचिंग सेंटर के सहारे सिविल सर्वेंट बन जाएंगे या IITN बन जाएंगे, तो वो सोच गलत है. क्योंकि फाइनली तो हमने अपने आप क्रैक करना है ना. हमारा अपना एप्टीट्यूड, हमारा अपना हार्डवर्क, उसी ने फाइनल रिजल्ट्स देना है. तो कोचिंग सेंटर्स डू हैव ए रोल, बट दे आर नॉट एवरीथिंग. माई एडवाइस टू यू इज दैट वन शुड हैव अ वेरी वेरी गुड सब ग्रुप, ऑन सब ग्रुप, जो आपकी जैसी थिंकिंग का है वो, बिकॉज सब ग्रुप ऑलवेज इज वेरी वेरी हेल्पफुल. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इज व्हेन शुड वन स्टार्ट. शुरुआत कब करें, सिविल सर्विसेज की तैयारियों की शुरुआत कब करें. सो आई वुड, एज आई हैव सेड अर्लियर, कि कम से कम 2 साल हमको चाहिए, मिनिमम 2 years. We can divide our preparation in 3 phases: foundation phase, then main phase, and the final phase. So foundation phase could be during your graduation itself. Those who have time, those who have decided at class 12th level itself. So as soon as they enter the BA, BTech level, from then onwards they can start following the civil services pattern and start analyzing the exam pattern, and then do little bit slowly. But the main phase of civil service studies should start 2 years before the main exam. Let's say you want to appear for the mains exam of 2019. That means December 2019. So your main phase should start in December 2017, 2 years before the main exam. And the final phase should be just 2 months before the commencement of prelims. The foundation phase consists of going through NCERT books, newspapers, magazines, basic books, also doing some background reading. And the final phase, the main phase, of course, includes standard books and detailed and advanced books. Remember that every day counts and every hour also counts. Next, I would like to talk about time management. Those who go for civil services should know how to manage their time. Time flies, everyone knows. But we also know that we are our own pilot.
So how to spend time depends on us only. Sometimes a fraction of a second can win you a medal at Olympics. एक छोटे से फ्रैक्शन से, कहते हैं मिल्खा सिंह ने मुड़ के देखा और उसका मेडल छूट गया, 4th नंबर पे आ गया. तो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड. और कभी कभी एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड से ट्रेन छूट गई और आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम छूट गया. यू कुड नॉट अपेयर फॉर द एग्जाम. और इंटरव्यू में भी रास्ते में जाम लग गया, इंटरव्यू नहीं दे पाए. सो टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Talking about time management, most important is goal setting, and goals need to be smart. Smart goals का मतलब है S for specific goals, M for measurable goals, A for achievable goals. हमारी कैपेसिटी है नहीं, अचीव हम कर नहीं सकते, and we make a goal that I will finish the history within 1 month. We cannot. So the goal should be achievable and realistic and time bound. If we say that our long-term goal today is civil services, then we should further set our mid-term goals, short-term goals, and immediate goals. And then we should also have a follow-up of the goals. Whether how much off the target we are going, and then we can readjust our goals. But this thing is very very necessary. बहुत ज़रूरी है गोल सेट करना, टाइम लिमिट सेट करना और फिर उनको फॉलो करना. लाइफ में टाइम मैनेजमेंट का सबसे सिंपल फंडा ये है कि आप लाइफ की हर एक्टिविटी को अर्जेंट और इम्पोर्टेंट 2 टुकड़ों में बांट लीजिए. अर्जेंट और इम्पोर्टेंट. सो जो आपका टाइम इम्पोर्टेंट चीज़ों में लगना चाहिए, सबसे ज़्यादा टाइम आपका इम्पोर्टेंट चीज़ों में लगना चाहिए. किंतु कुछ चीज़ें अर्जेंट हैं, उसमें लगाना पड़ता है. यू कैन नॉट अवॉइड. अर्जेंट है तो करनी ही पड़ेगी, लाइक फायर फाइटिंग. सो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट इज फर्स्ट कैटेगरी. नेक्स्ट कैटेगरी इज अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट नहीं है पर अर्जेंट है, करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट. इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारी तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है, बेशक अर्जेंट नहीं हो. बट द लास्ट लेसन इज ऐसे पॉइंट विच इज नीदर अर्जेंट नॉर इम्पोर्टेंट. We have to cut out this thing from life. ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए न तो इम्पोर्टेंट हैं और न ही अर्जेंट हैं, और हम ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट करते रहते हैं, उसको अपने लाइफ से काटना है. टाइम वेस्टर्स क्या हैं? जैसे टीवी, सोशल मीडिया, विजिटिंग फ्रेंड्स, ओवर सोशलाइजिंग. दीज थिंग्स आर नीदर अर्जेंट नॉर इम्पोर्टेंट. सोशलाइज करना बाद में कर लेंगे. लेट्स फर्स्ट अचीव अवर गोल. जा कर के विजिटिंग फ्रेंड्स फालतू के डिस्कशन करना है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है. तो वी हैव टू कट ऑन दिस टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़. नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट इज इम्प्रूविंग रीडिंग स्किल्स. आप अपनी रीडिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें? बिकॉज कुछ लोग हैं जो 1 घंटे में जो लगाया वो उनको याद रहेगा. कुछ लोग हैं उनको 10 घंटे लगा के तो भी उनको समझ नहीं आया. सो दिस इज इम्पोर्टेंट दैट हाउ टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स. व्हाट टू रीड, हाउ टू रीड, एट व्हाट स्पीड टू रीड, एंड हाउ मच रिपीटिशन इज रिक्वायर्ड. द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट आवर ब्रेन इज लाइक ए कंप्यूटर. हमने अपने कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन भेजा, उसको वापस निकालना है, रिट्रीव करना है. कितना ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाते हैं, वो ही हमारी मेमोरी बनेगी. एक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है, इंटरनेशनल स्टडी है, विच शोज दैट वी कैन रिमेंबर ओनली 47% आफ्टर 1 hour. और आफ्टर 1 week ओनली 25%, एंड आफ्टर ए ईयर जस्ट 5%. तो 1 साल पहले जो मैंने तैयारी की थी हिस्ट्री की, वो आज मुझे एग्ज़ाम देना है तो सिर्फ 5% मुझे याद है. तो फिर मैं क्या करूँगा?
हाउ विल आई रिप्रोड्यूस? तो मेरी रीडिंग स्किल्स बेकार हो गई। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज रिविजन। जो चीज़ हमें एक घंटे बाद 47% याद थी और एक दिन बाद 33% याद थी, अगर हम उसी को उसी दिन रात को रिवाइज कर लें तो वो उसकी परसेंटेज 33 से उठ करके 55 हो जाती है। एक बार अगर हमने उस रात रिवाइज कर लिया तो फिर वो रेशो उठ के 55 पे जा रही है। अगर हमने 4 रिवीजन कर लिए तो लगभग साल में 4 रिवीजन कर लिए तो 90% तक डाटा हमारी मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, हमारे दिमाग के कंप्यूटर की। तो रिट्रीवल इज पॉसिबल। सो 4 to 5 रिपीटिशंस आर द आइडियल थिंग। रीडिंग स्किल्स में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से रेट ऑफ लर्निंग कैसे है, उसके लिए कि हम चीज़ों को इवेल्युएट करें, एनालाइज करें, कंपेयर करें। अगर हम ये जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा हमारा रिटेंशन पावर बढ़ेगा। एक विजुअल मेमोरी की बहुत वैल्यू है। जो हम न्यूज़पेपर में रीड कर रहे हैं, हेडलाइंस देख रहे हैं, अगर उसी को मैं टीवी पे देखता हूँ तो उसकी ज़्यादा मेरा विजुअल मेमोरी में और ज़्यादा रिटेंशन हो जाता है। कई बार हमें मेमोरी बढ़ाने के लिए चेंज द सब्जेक्ट टू अवॉइड फटीग। एक सेम सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते फटीग हो जाती है। तो मेरा एडवाइस है कि हमेशा आप लोग एक बार में 2 सब्जेक्ट लेके चलिए। आप जो मिड टर्म टारगेट सेट करते हैं 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, कि इसमें हम हिस्ट्री ख़त्म कर देंगे या इको ख़त्म कर देंगे या एथिक्स ख़त्म कर देंगे, तो आप हमेशा एक साथ 2 सब्जेक्ट लेकर के चलिए। वन दैट इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, जिसको आपको पढ़ने में मज़ा आता है, जो आप कभी भी पढ़ लेते हैं, और दूसरा वो जो आपको थोड़ा सा टफ लगता है। तो जो आपके मैक्सिमम कंसंट्रेशन आवर्स हैं उसमें आप टफ सब्जेक्ट को लीजिए, और जो आपके इजी आवर्स हैं उसमें आप इजी सब्जेक्ट को लीजिए। चेंज भी हो जाएगी, बोर्डम भी ख़त्म होगी और आपकी मेमोरी रिटेंशन भी अच्छी होगी। नाउ नेक्स्ट आई वुड discuss about is improving the writing skills. Because many people know everything, बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनके पास और उनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी है, किंतु उनको राइटिंग नहीं आती, अच्छे से लिखना नहीं आता। Sometimes too much knowledge becomes a negative point for them. यूपीएससी ने पूछा 200 शब्दों में लिखिए, उनको इतना आता है वो 500 शब्द लिख डालते हैं। सो यूपीएससी वुड थिंक कि यू कैनॉट ओबे सिंपल कमांड, दे वांट यू टू आंसर इन 200 वर्ड्स एंड यू आर राइटिंग इन 500 वर्ड्स। व्हाई? व्हाट फॉर? देयरफॉर स्टिक टू द वर्ड लिमिट, बी टू द पॉइंट। पूछा कुछ है और आंसर कुछ और कर रहे हैं। पूछा इकोनॉमी का एनालिसिस है और साथ में आप उसमें 10 चीज़ें और बता रहे हैं इधर से उधर की। सो बी फैक्ट बेस्ड, बी लॉजिकल। लॉजिक चाहिए वहाँ, इमोशंस नहीं चाहिए। यू मे बी इमोशनल अबाउट सम सब्जेक्ट, यू मे हैव योर ओन व्यू पॉइंट्स, बट वहाँ तो लॉजिकल लिखना है। उसने एनालाइज करने को बोला है, कमेंट करने को नहीं बोला है। इन केस देयरफॉर योर आंसर शुड बी टू द पॉइंट, इट शुड बी फैक्ट बेस्ड, it should be logical, not just emotions. There should be no repetition in your answers. Sometimes you are writing again and again, same one point you are writing 10 times, so that will bring you negative points. As I said earlier, stick to prescribed word limit. I know people who would write 500 words in place of 200 and then they will get 0 marks, because the basic thing that you are not sticking to the rules of the game. You are not disciplined enough to stick to the rules of the game. Always write in simple language, your own language. Don't try to reproduce the language of the books, reproduce the language of the newspaper of some article. No, they want that you also have your own language. आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, अपनी भाषा में बोल सकते हो, अपनी भाषा में एनालाइज कर सकते हो।
there are few precautions before you start writing. Firstly, you must read the question paper at least twice. If possible, thrice, but at least twice. Sometimes you just miss out on one very important aspect of the question. So you are answering just half the question. Therefore, sometimes you misunderstand the question. Therefore, reading it twice is very, very important. Question must be read twice. And you must understand the question and its different shades. हर एक के क्वेश्चन के अलग अलग शेड्स होते हैं. हर क्वेश्चन में कोई कीवर्ड होता है. यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट कीवर्ड कि क्या है, मेनली क्या जानना चाहता है. यू मस्ट आंसर all parts of the question. I have seen one student making the structure of answer like an essay. 200 शब्द का लिखना है and he is making introduction and then the main body and then the conclusion. How can you do it? You have just 200 words. Just stick to the question and be to the point. You don't need to make it like an essay. Next thing I would come to is to improve your writing skills, that keywords are important. Sometimes the examiner asks you explain, elucidate, illustrate, comment, analyze, examine, discuss, identify, define, compare, evaluate, criticize. So all these words have a different meaning. All these words. Every word has a different shade. तो वन मस्ट नो कि हर एक में क्या करना है. अगर किसी ने कमेंट मांगा है आपसे, टिप्पणी करने को बोला है, सो दैट मीन्स you are required to give your own comment about the topic. What you think about it. That is the comment. कि आपकी क्या सोच है, आपके क्या कमेंट्स हैं, आपकी क्या टिप्पणी है. That is all you have to write. But if he asks analyze this thing, that means you have to analyze the topic. Every topic has its pros and cons. Article 370, if he says that analyze the consequences of removing Article 370, that means you have to write all the shades of it and analyze it in all forms. What will be the pros, what will be the cons. We can further break up the topic and then further analyze. And our analysis has to be objective. It has to be like a scientist. That is analysis. But if you are asked to give only comment, so you give comment whatever you feel is okay, only that part you have to write. तो इन सभी कीवर्ड्स का अलग अलग शेड्स है, अलग अलग मीनिंग है, और उसको हमें उसी तरह से आंसर करना चाहिए. नेक्स्ट. In the end, before I take your questions, I would like to take your questions. We will talk about facing the interview board. Let's say, what is interview? What interview is all about? As we all know that interview is the final part of civil services exam. Interview is basically a personality test. It is not test of your knowledge. क्यों? लोग कहेंगे ऐसा क्यों? Because UPSC has already tested your knowledge. They have tested your knowledge through prelims and then mains. Objective questions as well as subjective questions. Knowledge in the world is unlimited. You cannot have everything you cannot know everything on earth. So your knowledge has already been tested. It is now, interview is a personality test. What the board is looking for when they are interviewing a candidate, we have to see what the board is looking for. They want a person with honest approach, sincerity of purpose, and willingness to work hard. They are looking for a person who is ethical, who has positive attitude towards life. We can define positive attitude
through 5 C's: compassion, conviction, commitment, courage और confidence. लाइफ में 5 चीज़ें पॉजिटिव एटीट्यूड वाले आदमी के पास होनी चाहिए. So the board is looking for this, कि whether you have these positive traits or not, whether you have a balanced personality or not, whether you are mentally alert, you have presence of mind or not, whether your thinking is clear, cohesive, logical, whether you can explain things clearly, logically, analytically. This is what UPSC is looking for. It is looking for your decision making capabilities, whether you can work under pressure. So we should see what UPSC is looking for. Next point is what to prepare. As I said earlier also, you don't need to prepare everything in UPSC. Your focus should be on questions about yourself, questions about your educational background, contemporary current affairs questions, and then in the end common sense questions. मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा. 2010 में मेरे पास एक कैंडिडेट आए, मिस्टर मनप्रीत सिंह, एंड ही सेड कि साहब मेरा पिछले 2 साल से इंटरव्यू में 60 नंबर आ रहा है एंड आई हैव नॉट बीन एबल टू मेक इट. जो उसका मेंस का स्कोर था वो सारा बेकार हो गया क्योंकि इंटरव्यू में 60 नंबर आ गया. सो आई टॉक टू हिम फॉर 1 आवर एंड देन आस्क्ड हिम कि आपको क्या लगता है, वाई हैव यू बीन गेटिंग लेस स्कोर इन इंटरव्यू. तो ही सेड सर आई फील दैट माई नॉलेज इज लेस. मेरे में नॉलेज की कमी है, आई लैक नॉलेज, द रिक्वायर्ड नॉलेज. सो हिज एनालिसिस वाज रॉन्ग. भाई नॉलेज की कमी होती तो आप 3 बार मेंस कैसे क्रैक कर लेते. अगर उनके अंदर नॉलेज की कमी होती तो 3 बार मेंस क्रैक नहीं होना था उनका. तो देन आई टोल्ड हिम कि इट इज़ नॉट दैट. और नॉलेज तो आपका ऑलरेडी टेस्ट हो चुका. यूपीएससी नॉलेज टेस्ट नहीं करती है इंटरव्यू के दौरान, वो खाली आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करती है. सो व्हाट आई फाउंड अबाउट दैट पर्सन वाज दैट ही वाज यूजिंग मे बी. ही वाज यूजिंग द वर्ड मे बी. ही मस्ट हैव यूज्ड इट 50 टाइम्स ड्यूरिंग दैट 1 आवर इंटरेक्शन. तो इट बिकेम हिज क्लीशे, तकिया कलाम बन गया. हर शब्द, हर सेंटेंस के आगे मे बी लगा रहे हैं. ठीक है, आप लगाओगे भी मे बी इसका कारण ये है या मे बी नहीं है किसी चीज़ का कारण, बट यू कैन नॉट से कि मेरा नाम मे बी परमजीत सिंह है. तो यू कैन नॉट से दैट मे बी. देयरफॉर ही गॉट इट that may be reflect that you have got doubts in your personality. On everything you are doubtful about everything. You have lack of confidence. So ये मैंने आपको खाली एक एग्जाम्पल दिया कि इंटरव्यू में ऐसे भी लोगों को प्रॉब्लम होते हैं. मैं अगला पॉइंट बोल रहा हूँ कि हाउ टू आंसर द इंटरव्यू बोर्ड. उसके बारे में मैं 8-10 टिप्स दे रहा हूँ. पहला है कि लिसन केयरफुली, उनको ध्यान से सुनो. क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो आप पूछ कुछ रहे हैं और आंसर कुछ और दे रहे हैं, इस क्वेश्चन में आ जाएंगे. अगर आप नहीं समझ पाए, लेट्स से कि पूछा और आप यू आर नॉट एबल टू मेक आउट कि पूछ क्या रहे हैं, तो रिक्वेस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन. कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ वेरी नॉर्मल. कितनी बार हम म्यूचुअल इंटरेक्शन करते हैं, म्यूचुअल बात करते हैं, एक जने की बात नहीं समझ पाते कि उसने क्या कहा या क्या पूछा. हम कहते हैं यार प्लीज़ रिपीट कर दो. जस्ट एग्जैक्टली इन द सेम स्टाइल यू शुड से दिस कि सर काइंडली रिपीट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. दिस इज फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट. सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट योर आंसर शुड बी ऑनेस्ट. इट शुड नॉट बी ए ट्यूटर्ड आंसर. अभी I met one of the board members who is now retired.
UPSC members who used to take interviews for civil services for 5 continuous years, and he was considered to be very tough. उनके बोर्ड में नंबर ही नहीं आते थे। तो मैं उनको अपनी किताब भेंट करने गया, क्रैकिंग सिविल सर्विसेज द ओपन सीक्रेट। तो मैंने क्यूरियोसिटी से पूछ लिया उनको कि सर आप जो है आपके उसमें नंबर बहुत कम आते थे। वो उन्होंने मुझे फार्मूला बताया कि मैं देखता था कि लड़का लड़की जो है कितनी ऑनेस्टली आंसर कर रहे हैं। और आजकल जो है इतने मॉक इंटरव्यूज, कोचिंग सेंटर्स, इतना कुछ आ गया है कि उसके थ्रू लोग बात जो है पता चला ट्यूटर्ड आंसर दे रहे हैं। इफ़ योर आंसर इज़ नॉट ऑनेस्ट, इफ इट डज नॉट हैव योर ओन कन्विक्शन, तो वो आंसर ऑनेस्ट नहीं हुआ ना, ट्यूटर्ड आंसर हो गया। सो बिकॉज ऑफ दैट ही यूज्ड टू कट मार्क्स। So please be honest with yourself. Next point is be to the point, crisp, concise. छोटी सी बात पूछी उसने कि आपके स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। आपने कहा जी 5 करोड़, और साथ में आपने ढेर सारा एनालिसिस भी बोल दिया। 5 करोड़ है, इतना हिंदू है, इतना मुस्लिम है, इतना ये है, इतना वो है, ज़्यादा है, कम है, क्यों नहीं है। ही इज़ नॉट आस्क्ड। अगर उसने इतना ही पूछा कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ योर स्टेट, you just say 5 crores. So be to the point, be crisp, be concise. Next important point during an interview board is art of saying no. Art of saying no. You cannot know everything on the earth, first of all. Secondly, sometimes you knew but you have forgotten, so you cannot recollect. So this is the truth. जो सच है वो बोल दो, सर नहीं पता, आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो। That is one response. Another response could be, sorry sir, I know the answer but presently I am not able to recollect. याद नहीं आ रहा अभी। कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है। इंटरव्यू बोर्ड आपको नॉर्मल मार्क्स, एवरेज मार्क्स दे के चलता है। 150, 160 मार्क्स हर कैंडिडेट को देकर चलता है इंटरव्यू बोर्ड। उसके 200 भी आप बनाते हो और 100 भी आप बनाते हो। इफ़ दे असेस योर पर्सनैलिटी टू बी पॉजिटिव, they will keep on adding marks to that average 160. If they assess your personality to be negative, they will keep cutting marks. कि बंदा जो है ना, he beats about the bush, इसको क्लैरिटी ही नहीं है, क्वेश्चन की क्लैरिटी नहीं है, क्या बोल रहा है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो या इसको कॉन्फिडेंस कम है, या कुछ ज़्यादा है, या बहुत एरोगेंट है, या बहुत इगोइस्ट है। All these points go minus. So they will bring you from 160 to 100. Sometimes if they catch hold of some another point, like I told you, maybe they will bring you down to 60 points. So that is what we have to avoid. That we should not have any negative traits in our personality, and we should show positive parts of our personality. So art of saying no is very, very important. About the tutored answer, I go back to the tutored answer part. Remember, there is no single answer to many questions. कितने सारे सवाल हैं, उसके 50 आंसर हो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है। आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं? आप जो मैंने बोला उसी को रट के सुनाएंगे, कोई ज़रूरी है? या जो आपके कोचिंग सेंटर ने बोला वही सुनाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। यू कैन हैव 10 अदर आंसर्स and maybe all of them are correct. Therefore, never think कि इसका एक सिंगल फिक्स्ड आंसर और वही मुझे देना रटा है, बिल्कुल नहीं। There can be many answers to one question. Also, remember that you must admit your mistakes and ignorance, if any. नहीं आता जी, नहीं आ रहा, या सर मैंने गलती कर दी। Don't discuss. Don't argue. Discuss but don't argue. Because they sometimes ask you to discuss. Discussion is okay, it is normal. Life में discussion हो रहा है, एक किसी भी बात पे चर्चा हो रही है, बात हो रही है, किंतु argument, इसको don't drag it to the level of argument. You are only discussing like gentlemen. Be polite. Always stay calm, stay composed, stay balanced. Your views must be very impartial, because
If you are biased towards one side, then that is considered to be very negative. Be it the question of communalism, casteism, or so many important questions in life. Your views must be balanced. Let's take the example of Article 370. Article 370 has both the sides. This is one article which has kept Kashmir quite different, quite away from the rest of India. But is removing Article 370 so easy? If we are jingoist, we can say, oh, just remove Article 370 and the problem of Kashmir will be solved. अगर इतना आसान होता तो 70 साल में प्रॉब्लम चलती क्यों? सोल्व हो ही जाती है. आर्टिकल 370 की कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कोई उसमें इंटरनेशनल कमिटमेंट है. द मोमेंट यू रिमूव आर्टिकल 370, द इशू गेट्स इंटरनेशनलाइज्ड. So it is not so easy to do it. Therefore, we must have the balanced picture of the topic. So my point was that the board finally assesses your overall personality and not just your external appearance. Everything is important, but it is finally your overall personality, including your language, the way you answer, the way you handle the things, the way you manage the stress. Everything counts. That is what the interview is all about. If I can be shown the questions. Yes, if I can be shown the question, then is prelims exam difficult? Yes, it is difficult because only 10,000 pass out of 5 lakhs. So it is difficult, it's not easy. मैथमेटिकल ऑप्शंस, ऑप्शनल के बारे में अगर हम बात करें तो ऑप्शनल मैंने पहले कहा कि सभी सब्जेक्ट ईजी हैं और सभी सब्जेक्ट टफ हैं. ऑप्शनल उसी पे जाइए जिसमें आपका सबसे पहले आपका इंटरेस्ट है. नंबर 2 जिसमें आपकी स्कोरिंग कैपेसिटी है, आपकी खुद की, किसी दूसरे के कहने पे मत जाइए. इंटरव्यू व्हाट इज इट? इंटरव्यू इंग्लिश में है क्या? व्हाट इज दैट? Language of interview does not matter. If the board asks you in English, and if you have English medium, you should answer in English. If the board asks you in Hindi, you can answer in Hindi. Thank you.